You've done your BA.LLB from Punjab. Yes, sir. How much do you know about the history of the Sikhs? Sir, I am not aware of the history. I just went there for education purpose, 5 years only. So you did not educate yourself beyond law? Sir, I was more into enjoyment than... Into volleyball and Yes, sir. swimming. Huh? In swimming, can you do all the strokes or only some? Sir, mostly freestyle because to me it's a kind of practice to relieve my stress. If you had to give death penalty to someone, capital punishment, what Yes. are the factors you look into? So the mitigating factors that I would take into consideration are, first of all, whether it's falling into any of the exceptions or not, or whether the person does he have any family and he's the sole breadwinner of the family, or what was his intention behind doing the act, and all of these things will be my prime concern if I'm giving a death penalty. Okay, but if you were to decide whether to impose life imprisonment or death penalty, how would you decide? Sir, it depends from case to case. If it's a heinous case, which to me heinous case is a rape case, if it's regarding a minor or a grown-up or gender neutral, I would definitely impose a death sentence rather than giving a life imprisonment, because violating someone's right and the other person, I think, do not deserve to be. No, but don't you think that's very... Can a judicial officer take such an extreme position? Sir, it is. If we look it from one perspective, it is. But if someone who can think of violating a small child, I think that person has passed all of the dimensions of monstrosity and he cannot be reintegrated into the society. So that's my opinion regarding it. So you are saying that any case involving sexual assault and death of a minor child automatically falls within the rarest of the rare cases? No, sir, definitely not. I will definitely apply my judicial mind and weigh everything. But if there is a clear indication that it's such a case that the person has done it, so I would not hesitate from awarding him death penalty. Okay. 125 CRPC. Yes, sir. Regarding maintenance. और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा? सर कॉलेज में पढ़ा था, अभी आई कैन नॉट रिकॉल इट. सो क्या उन पर लागू होता है डाइवोर्स पे? Yes, sir. So there was a judgment. I don't clearly remember the judgment, but the Honorable Supreme Court decided that if a woman is not able to get maintenance through their personal laws in Muslim law particularly, she can always come under Section 125 CRPC. और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट Yes, sir. प्रोटेक्शन ऑर्डर Yes, a protection order. जारी हुआ, And हस्बैंड पालना नहीं कर रहा, उसके पास क्या रेमेडी, क्या तरीका, क्या कहाँ जावे? sir, to the women जिसके साथ हो रहा है, sir, she can always come to the court and she can ask the protection officer. Protection officer is there जो कि make sure करेगा कि सारा मतलब जो भी हो रहा है वो हो रहा है, या फिर penalty भी impose कर सकता है court. She can always. कैसे करेगा? क्या तरीका उसके पास, क्या करना चाहिए उसको? Sir, they will like ask the police concerned of that day. क्या है, क्या पेनल्टी है उसमें? So penalty I am not able to remember right now. तो क्या कॉम्बिनेबल है या नॉन कॉम्बिनेबल है? ऑफेंस है क्या वो कोई? अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर की पालना नहीं की जा रही हस्बैंड द्वारा, तो क्या वो कोई ऑफेंस है? Sir, it is an offense, but I don't remember. कॉम्बिनेबल है या नॉन? Sir, I don't remember it right now. अच्छा, दोनों में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहता है मेंटेनेंस के लिए, और आपका वो 125 भी कहता है मेंटेनेंस के लिए, दोनों फाइल कर रखी है उसने,
दोनों साइमल्टेनियस वो साथ अलग भी की जा सकती है, तो क्या अलग अलग दो मेंटेनेंस मिल जाएंगे उसको? No, sir. There is a provision in the DV Act, Domestic Violence Act itself, that if the woman has claimed maintenance from somewhere else, it will be adjusted to the maintenance that is given under the DV Act. I don't remember the provision right now, but there is a provision for that. एक केस है, 5 आदमी कॉमन ऑब्जेक्ट से, कॉमन ऑब्जेक्ट ये है कि इसने हमारे खेत में आज जो है हल चला दिया, वहाँ डाणी में बैठा हुआ है, हमें इसको पीटना है, अच्छा, लेसन देना है इसको। 5 भाई साथ जाते हैं और उसको पीटते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट है उसी के लिए, अनलॉफुल असेंबली है उनकी, कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका, उसको पीटना है, पीट के अच्छी तरह से अपना हड्डियां वड्डियां तोड़ देते हैं। वापस जाने के दौरान एक जो छोटा भाई होता है तो वो उधर देखता है, तो उसकी जो बहन वहाँ सोई होती है, रात का टाइम है, तो उस समय उसका वो जेवर तोड़ के जेवर डाल लेता है। अच्छा, एक भाई उधर, सब भी डानियां अलग अलग एक साथ है, इकट्ठे हो गए हैं, एक भाई उधर से जाता है, अलग निकलते हैं, सब बिखर जाते हैं, तो दूसरा भाई उसकी भैंस को खोल के ले जाता है और ट्रक में चढ़ा के बेच देता है। अब इन लोगों ने क्या 149 ही है? हाँ सर, सारे एक्ट के लिए सारे 5 लाइबल है? सर नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब उनकी इंटेंशन मेट हुई थी, जब उन्होंने सोचा था कि हम लोग ये पर्टिकुलर क्राइम करेंगे, तो सर वो पर्टिकुलर क्राइम उनका हो चुका था जिनके लिए उनका मीटिंग ऑफ माइंड था। बट जब वो काम हो चुका था, दैट मीन्स वो एक्टिविटी वहीं खत्म हो गई थी, तो उसके बाद जब वो लोग जा रहे थे उसके बाद में किया, तो उसके बाद में उन लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं था किसी का कि हमें ये करना है, ये करना है, तो फिर टू मी आई डोंट थिंक ये कॉमन ऑब्जेक्ट का पार्ट होगा। ऑफेंस तो हुआ होगा सर, ऑफेंस हुआ है बट इंडिविजुअली लायबल। Why you want to become a judge? Sir, I want to become a judge because studying law gave me freedom, and I think it gave me a voice and it made me confident. So I thought about practicing at first, but the life of a judicial officer always enticed me, so I chose this profession. So, you are enrolled as an advocate or not? No sir, I haven't Still you are enrolled not myself. enrolled. Yes sir. You pass out from Punjab University Law from Sir, Punjab. National Law University, Yes. Punjab. At NLU. Yes sir. Originally you belongs to Rajasthan. Yes sir, natively I'm from Rajasthan. Native from Jaipur. Dausa district. The provisions of Hindu law are applicable for scheduled tribe also? Sir, they are not. The scheduled tribes are governed by their own local laws only. But if any of the scheduled tribes are following the Hindu customs and everything, then they can be applied to them. What is the difference between Bhil Meena and Meena? Sir, there are several kinds of Meenas in Rajasthan. It's further divided into Chaukidar Meena, then Jamidar Meena, then Bhil Meena. Bhil Meena, they belong to a specific area where like they are still very primitive in their approach, whereas the other Meenas, they are on a better pedestal than them in terms of progress. So you have not practiced and you have not enrolled as an advocate. So how you manage the court? Sir, I think that training में वो सब सिखाया जाएगा, and I would try my level best. ट्रेनिंग में कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग में कोड क्राफ्टिंग नहीं सिखाई जाती। Sir, I believe in myself कि मैं कर लूँगी इतना तो at least. Thank you. ये बताइए improper admissions and rejection of evidence क्या चीज़ है? I am not able to recall. Section 167 of evidence. Yes, sir. 167 of evidence. Rejection of evidence. Yes, sir. If there is something which is hampering the judgment which has come, so new evidence can be taken. Or mostly it is not done, but if it's hampering the judgment, it can be done. Public document किसको बताया गया है? Sir, under section 74, public documents are basically records which are kept. Records of 74, public document is 74. So records which are kept by made by or kept by the legislative officer, the judicial officer or the police officer, and the any record of the sovereign and anything. जज बनने के बाद क्या दोबारा कोई आगे का एग्जाम देंगे, खाली जज ही बनना चाहती हैं? सर, अभी सिर्फ मेरा राजस्थान जुडिशरी फोकस है, अभी मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है। और जज क्यों बनना चाहते हैं, उन्होंने बताया? सर, प्रॉपर जवाब नहीं आया।
सर मेरी तरफ से यही है, मतलब क्योंकि सर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ बेसिकली, और मेरी फैमिली में कोई भी जुडिशरी का नहीं है, तो मेरा इनिशियली हमेशा पीएमटी का था, बट फिर मैंने देखा और बहुत एवेल्युएट किया तो मुझे लॉ बहुत अच्छी फील्ड लगी। देन मैं कॉलेज में गई तो मेरे कॉलेज में बहुत सारे सीनियर जजेस थे, तो मैंने उनसे थोड़ा पूछा, वो बात करी, एंड देन उसके बाद में मतलब मैंने भी जजेस की लाइफ देखी। एंड सर जब मैं थी जिस समय पटियाला में, तो उस समय राम रहीम जी की जो जजमेंट आई थी, तो द जज वॉज वेरी प्रेज्ड। उन्होंने सबने बोला था कि दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी नीड इन जुडिशरी। सो आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट विच आई लाइक फेल्ट वेरी नाइस कि आई वॉन्ट टू गो इन टू जुडिशरी, because we are not just, it's just not a job, it's basically a responsibility towards all of the citizens. Sir, magistrate and judge, if they are doing a civil act they are judges, but if they are doing anything criminal they are magistrates.